another episode of Auto Show by the Car Mall और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही exciting sporty car which is designed by passionate experts in Namyang Proving Grounds in South Korea. It is the Hyundai Venue N-Line. So the N-Line stands for the cars which are sportier and are specially designed in Namyang Proving Grounds in R&D Center of Hyundai in South Korea. So, आपको फटाफट से दिखाएंगे कार और बताएंगे कि इस Hyundai Venue N-Line में क्या खास है, what is this N-Line stand for और इसमें क्या क्या tweaks Hyundai ने इस venue में दिए हुए हैं और ये normal venue से कैसे बेहतर है and should you be buying this car. तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा और हम कैसी कार्स लेके आए आपके लिए. हर संडे मैं लेके आऊँगा आपके लिए कोई ना कोई नई कार. और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, मुझे फॉलो करिए ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ @theautoexpert with a X without a E. So without much ado, let's take you for a walk around of this Hyundai Venue N-Line. So this Hyundai Venue N-Line, as you can see from the front, comes with the N-Line bumpers and the N-Line skid plates at the bottom, and there is a larger air intake. As you can see, there's a smart sporty grille, and I like the black treatment on the chrome. It's looking very sporty and very stylish. And if you can see it from the side, even the alloy wheels that has the N badging on it, so it's the specifically designed N-Line alloy wheel for this Hyundai Venue N-Line. और अगर rear bumper की डिज़ाइन की आप बात करेंगे, so that is also a little different with the twin tail exhaust pipe. So it is very sporty, and the best part of this car is that it has red highlights running all over the car. If you can see the front bumper, it has the red line which signifies that it's a N line. And as you can see, these brake calipers, they are also red in color. And not just the brake calipers, if you can see these roof rails, the black roof rails with the white car, this also has this red tinge on it. Now let me take you at the back of this car and show you the boot. So that is the back of the car. This comes with a spoiler, the shark fin antenna, the rear wiper, the defogger, and there is a reverse camera as well. And the boot opens not from here but from here at the bottom. The boot space of this car is a decent 350 liter of boot space. काफ़ी कुछ हमारा सामान रखा हुआ है. That's the parcel tray. The spare wheel is underneath this. And let me close this for you. आप पीछे देख सकते हो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नीचे स्किड प्लेट और डिफ्यूज़र ट्रीटमेंट दिया हुआ है. Those are the twin tail exhaust pipes, and these are the real exhaust and not the fake ones. And that's the N-Line badging. और यहाँ पे बहुत अच्छा LED tail lamp दिया हुआ है. It is actually very sporty, and we are eagerly waiting to see whether this car is peppy enough to drive or not. So finally we are inside the car, but before we take you on a drive of this car, let me show you the interiors and tell you about the features of the car. So this is the key of the car, of the Hyundai Venue N-Line. This is to lock, this is to unlock, this is to open the boot, and this is to start the car remotely. ये है हमारी Hyundai Venue N-Line का dashboard और cockpit, whichever way you may call it. And let me close the door. एंड यहाँ पे है इसका स्टार्ट स्टॉप बटन. ये हो गई कार स्टार्ट, एंड दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ द कार, अ फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. दिस इज़ द RPM एंड दिस इज़ फॉर द स्पीड. और नीचे सेंटर में आप देख सकते हैं बीच में यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट ग्राफिक डिस्प्ले दिया हुआ है. लेफ्ट इज़ फॉर द फ्यूल गॉज एंड राइट इज़ फॉर द टेम्परेचर. द वेरी स्मार्ट 3-spoke steering wheel with the N-Line badging here at the bottom, and it is fully leather wrapped with this red stitching from the inside. ये जो red element है ये पूरे Hyundai Venue N-Line में सब जगह यूज़ किया हुआ. आपको देख सकते हैं यहाँ AC वेंट्स में, यहाँ पे जो ड्राइव मोड का नॉब है, यहाँ पे ट्रांसमिशन के जो लीवर है उस पर भी यहाँ पे आपको टिंच ऑफ रेड मिलता है, एंड द N badging over here.
The dashboard is really looking very cool and sporty. I really love the seats. This also has the red stitching and the red piping. So the black and red combination is very sporty, and that is what this N-Line Venue stands for. So this Hyundai Venue N-Line comes with a fully digital infotainment screen, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा टच है and the touch is very responsive. It also comes with this blue link जो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में और फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, which will give you access to the host of features. That is media, radio, telephone, phone projection. You can project your phone. There's a valet mode as well, climate, voice memo, maps, settings. So there is a lot of things that you can do in this Hyundai Venue on this infotainment screen. यहाँ पे आपके AC के vents दिए हैं with a tinge of red. ये सारे आपके control के buttons दिए हुए हैं. That's for the hazard light. This is for the volume. This is to adjust the frequency of the radio manually. और यहाँ पे आपके ये AC के controls दिए हुए हैं. Very cool looking AC controls with again a tinge of red all around it. ये AC ऑन ऑफ करने के लिए, ये आपके वेंट्स के लिए, ये टेम्परेचर शो कर रहा है आपको इनसाइड, क्योंकि ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है तो आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं. दिस इज़ टू सेट योर टेम्परेचर एंड दिस कम्स विद अ C टाइप चार्जिंग, USB एंड अ 12 वोल्ट चार्जर एज वेल. और साथ ही यहाँ पे आपको मिलता है बड़ा ही अच्छा एक वायरलेस चार्जिंग पैड, जिससे आप अपना फ़ोन रिमोटली वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं. एंड दिस इज़ अ 7-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इन दिस कार. ये आपके ड्राइव मोड्स के लिए दिए हुए हैं. 3 मोड्स आते हैं इस कार में. जैसे ही मैं इसको रोटेट करूँगा यहाँ पे स्पोर्ट लिख के आ गया. सो वन इज़ स्पोर्ट, अनदर वन इज़ इको एंड द थर्ड वन इज़ नॉर्मल. यहाँ पे आपको जो है एडिशनल एक स्पेस मिलती है स्टोरेज की, दैट्स द ग्लव बॉक्स, और ये एक कूल बॉक्स की तरह भी काम करता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये AC का वेंट के लिए नॉब दिया हुआ है. एंड दीज आर द डोर ट्रिम्स. Those are all black again with the red stitching here on the armrest. There is no grab handle on the driver's side. There is one on the passenger side. The car comes with a sunroof, and this is the sun visor with a parking ticket holder. No mirror on the driver's side. The sun visor on the passenger side with the vanity mirror. These are your cabin lights, and this is to operate the sunroof. To open it and close it as well. The cover inside will be closed manually. यहाँ नीचे आपको 2 cup holders के लिए भी जगह मिल जाती है. That's the parking brake, and this is the center armrest between both the seats. It has a lot of storage inside as well. और ये कार आती है pedal shifts के साथ. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये pedal shifters दिए हुए हैं. So it's very nice and very useful if you are a driving enthusiast. So it's time to take you for a drive, and then we'll show you the rear seating comfort of this car. So we are finally behind the steering wheel and driving this Hyundai Venue N-Line, which we were looking forward to drive. And this is a 3-cylinder 1-liter turbo engine, and it generates a power of 120 bhp and a torque of 172 Newton meters. And this car also comes with pedal shifters. So अगर आपको कार में ज़्यादा peppiness चाहिए, so you can always shift the gears manually through this pedal shifters. And also there are 3 driving modes. Currently we are driving on the eco mode, and इस knob को जैसे ही हम rotate करेंगे, now this is a normal mode, let's bring it to the sports mode. And sports mode में आते ही the power kicks in and the car becomes more fun to drive. And जो ये N-Line Hyundai की है, इसमें जो नॉर्मल वेन्यू है उससे सस्पेंशन का जो डैम्पनिंग सिस्टम है वो काफ़ी लगभग 34% जो डैम्पनिंग सिस्टम है वो बेहतर किया गया है. सो द डैम्पनर्स आर मोर सॉफ्टर, सो यू विल feel a more comfortable and more cushiony ride while driving this Hyundai Venue N-Line. And the steering is also very nice. The grip is nice. It's a perforated leather wrapped steering, and it's very chunky and good to hold on to. So the
car is totally in control and very nice to drive. Without any further delay, we'll check the 0 to 100 of this car and tell you more about the driving experience of this Hyundai Venue N-Line. So stay tuned on the vlog and keep watching. Left foot on the brake and the right one on the accelerator. It's time to go. 3, 2, 1. 6,000 RPM and we've crossed 60, again 6,000 RPM, next 80, 90 and 6,000 RPM and it's 100. So the gear shifting is very nice. We're shifting gears at about 6,000 RPM and the drive is very smooth. Again, we have crossed 140. Let me try to shift the gears manually. This is a 7-speed DCT automatic transmission which is mated to the fantabulous 1-liter turbo engine of this Hyundai Venue N-Line, and it is actually fun to drive. The car is totally in control. We're driving at 165 and taking this curve ahead at 165. There is negligible body roll in the car. The car is fun to drive, and as we know, the car comes with all 4 disc brakes. Let's check out the braking of this car. So from 165 to 0, it is quite nice brake and the car was in control. As you saw, it always stayed in control and there was not even a single moment where we thought that we could lose control of this car. So full marks to Hyundai for the kind of drive feel, the suspension setting, every minute detail which they have got into. So finally I'm sitting at the back of this Hyundai Venue. तो अगर आप रियर सीटिंग की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है. अभी सीट को मैंने थोड़ा सा आगे किया हुआ है, बट अगर आप हेड रूम की बात करेंगे तो देयर इज़ डिसेंट अमाउंट ऑफ हेड रूम. जो सीट का रिक्लाइनिंग एंगल है वो भी काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है. तो यहाँ सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है. सो इट्स अ ब्रांड न्यू कार. आई एम नॉट टेकिंग ऑफ द प्लास्टिक्स राइट नाउ. एंड जो सीट्स हैं ये पीछे रिक्लाइन भी हो जाती हैं. सो देयर इज़ अ लीवर, आई कैन रिक्लाइन द सीट to a certain angle and adjust my sitting posture. और again like I said, it's a N-line, तो seating में आपको हर जगह यहाँ पे tinge of red मिलता है, which makes the car look very sporty. Again the rear AC vents have this tinge of red. as you can see, ये आप इसका वेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते हैं. यहाँ पे 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट दिए हुए हैं. यहाँ पे देयर आर नो पॉकेट्स हेयर. और यहाँ साइड में आपका आर्मरेस्ट दिया हुआ है टू कंट्रोल द पावर विंडोज़ एंड टू ओपन द डोर. द ग्रैब हैंडल, द रियर रीडिंग लाइट्स फॉर द रियर पैसेंजर्स. सो ओवरऑल इट्स अ decent sitting comfort, though thigh support, the under thigh support or the leg room could have been better, but the car, a compact SUV at this price point, it is a decent amount of space and a decent amount of comfort for the rear passenger. So friends, before we close the vlog, हम price point के बारे में बात कर लेते हैं कार की. So जो price है इस कार का वो 12.16 एक शोरूम से लेके 13.25 लाख रुपए एक शोरूम तक प्राइस आता है. 2 वेरिएंट आते हैं इसमें और उसमें भी आपको सिंगल टोन ड्यूल टोन दोनों ही ऑप्शंस मिल जाते हैं. सो द Hyundai Venue N-Line is more sportier, more exciting, more agile, and it's more fun to drive. So for the people who are looking to add more sportiness to the drive, who are looking to add more fun and more power to their Venue, this Hyundai Venue N-Line is suitable car for you to buy. So I hope friends आपको हमारा आज का ये Hyundai Venue N-Line का व्लॉग पसंद आया और आपको कैसी कार्स देखना पसंद है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना. We'll try to get more exciting cars for you every Sunday, a new car review on the same channel. और अगर आपने अब तक हमारे कार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी जाइए और हमारे कार के चैनल को द कार मॉल को सब्सक्राइब करिए और एक बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर संडे एक्साइटिंग कार रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन आते रहें. और इतना ही नहीं, हम सिर्फ कार रिव्यूज़ लेके नहीं आते. सो टू कीप यू एंटरटेन्ड और टू कीप यू engaged, we try to get you some lifestyle and travel vlogs also to places where all we get to travel. And follow me not to miss on any exciting stories. So keep watching, stay healthy, goodbye, God bless, ciao.